हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। क्या सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है यहाँ पे? क्या सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? हाय सुदीक्षा, रचना, सुबोध, मुस्कान, सलोनी, गार्गी, क्राइम मास्टर गोगो, यशस्वी, आरक्षा, सीएस स्टूडेंट आईसीएसआई, रचना, मिताली, बाबू। जैसे कल एंड परसों की क्लासेस को मैंने प्राइवेट कर दिया था, ये वाला क्लास भी आपसे दिस लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज आई वांट कि जितने लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं और जो एट द सेम टाइम लाइव हम लोग के साथ अटेंड करें, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना? चलो, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आइए शुरू करते हैं। हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वैभव चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उसके आंसर राइटिंग लेट्स राइट आंसर द रैंकर्स वे के एक और ब्रांड न्यू सेशन में हम लोग अभी इन सेशंस में ये सीख रहे हैं कि आपको जब भी एग्जाम का पेपर मिलता है फ्रॉम आईसीएसआई तो किस तरीके से उसका आंसर आपको लिखना चाहिए एंड आपके आंसर में क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपके आंसर को और एक रैंकर के आंसर को मतलब या एक आपको रैंकर बना सकता है यार रैंक लाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। तो बेसिकली हम लोग अपने ग्रुप 2 के जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबके लिए ये चीज सीख रहे हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ओपन बुक पेपर जिसका डिस्कशन हम लोगों ने परसों किया था। फिर येस्टरडे वी डिड आवर डिस्कशन फॉर एसएमसीएफ का पेपर जून 25 का, और आज हम लोग अपना तीसरा सब्जेक्ट का पेपर देखने वाले जिसका नाम है सीआरवीआई। जून 25 का हम लोग ये पेपर देख रहे हैं। तो ऑल्दो देख के ऐसा लग रहा होगा कि तीनों सब्जेक्ट्स के एक ही पेपर्स हुए, बट ओवरऑल नाउ यू हैव 3 पेपर्स एंड तीनों पेपर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक रैंकर की तरह आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आज का पेपर डिस्कस करने के बाद आपके 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट थिंग जो हम लोगों को करना बाकी था इन सीएस प्रोफेशनल, राइट? एक हम आपका वीडियो डेफिनेटली इसके बाद बना देंगे कि क्या क्या चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया एंड एवरीथिंग इज देयर इन द रिसोर्स गाइड। तो अपना बस ये प्रोबेबली आंसर राइटिंग का लास्ट सेशन होने वाला है जहां पर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आंसर राइटिंग करता है एक रैंकर और किस तरीके से वो ऐसे आंसर लिखता है कि मार्क्स अपने को ज्यादा है। डन? ओके, चलिए चलो अब इधर आते हैं। अच्छा देखते हैं पब्लिक करना है कि नहीं, पहले ये तो आओ, ये वाला लेक्चर करते हैं, ठीक है? आओ ना, देखो अब अगर हम लोग पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखें तो आपका ये क्वेश्चन पेपर भी काफी लंबा है, दैट इज 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है। और 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है का मतलब क्या हुआ, बहुत कुछ यहाँ पे केस स्टडीज वगैरह दिए हुए रहेंगे, राइट? बट अपने को घबराने का नहीं है बिकॉज आधा टाइम हम लोग को पता है कि केस स्टडी पढ़ना भी नहीं होता है। एक बार फटाक से हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आपका सीआरबीआई का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे कि आपका पूरा सब्जेक्ट 3 पार्ट में, वैसे ही पार्ट 1 जो कि होता है आपका 40 मार्क्स का जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगेन जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 2 ए भी होता है, ठीक है? तो 20 + 20 40 मार्क्स का हो गया। फिर आता है आपका पार्ट बी जो आपका वैल्यूएशन का ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ठीक है? फिर आता है आपका पार्ट सी जो कि इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है, अगेन 40 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 होता है। क्वेश्चन 5 में 4 पार्ट्स होते हैं 20 मार्क्स के एंड क्वेश्चन 6 में अगेन 4 पार्ट्स होते हैं 20 मार्क्स के। क्वेश्चन 6 में अगेन एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन रहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 ये 4 क्वेश्चन आपके मैंडेटरी कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है कि आप या तो 2 एंड 2A कर लो या फिर 6 या 6A कर लो। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ऑल इन ऑल 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में 4 या 2 पार्ट्स होते हैं, तो अपने ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्लियर हुआ सबको? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जैसा हम लोग हमेशा से करता है। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? क्या? चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 में तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पूरा आपको यहाँ पे एक लंबा सा केस स्टडी दिख रहा है, ठीक है? बट केस स्टडी में आने के पहले हम हमेशा आपको बोले किसी भी क्वेश्चन में केस स्टडी दिखे तो पहले उनके क्वेश्चन को रीड करो फिर केस स्टडी रीड करना अगर जरूरत लगे तो। लाओ देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 1A दैट इज एज एन एडवाइजर टू A, B, C and Z, ठीक है, गाइड देम अबाउट SEBI SAST regulations which regulate the acquisition of large stakes in the listed company.
What are the typical steps and corresponding timelines for the process advised by you? ठीक है, तो आपको A, B, C एंड Z को बताना है SAST रेगुलेशंस के अंदर। जब एक्विजिशन ऑफ लार्ज स्टेक्स इन लिस्टेड कंपनी होता है तो उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके स्टेप्स एंड टाइमलाइंस आपको प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली ओपन ऑफर के टाइमलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, इसके लिए आपको ऊपर का ये पढ़ने की जरूरत नहीं है केस स्टडी। ठीक है, सेकेंड, Q has approached you to seek guidance on whether the increase in his voting share due to buyback of shares by the company will attract obligations under SAST regulation। ठीक है, अगेन बाईबैक अगर हो रहा है तो बाईबैक की वजह से क्या आपका SAST का ऑब्लिगेशन आएगा ओपन ऑफर का, ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए अपने को आंसर दे रहा है। अगेन केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। The acquiring companies often use cash deals or stock deals for acquisition. Differentiate between the two and enumerate the advantages of cash deal and stock deal. ठीक है, what are the considerations to be kept in mind while making a choice between the two? Again, nothing to do with the case study, direct question है, लिख सकते हैं अपने। Last, the HR head strongly believes one modification that has great potential to affect the merged entity is a change in the organization structure. Regardless of whether the change is large or small, planning and an intense analysis are vital to creating a decision-making and communication framework that will promote post-merger objectives and help the new business growth. As a member of the HR team, what do you suggest to synchronize the differences in cultural and organization structure of Sangam Limited, especially during the pre-merger diligence? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि एक बार आपका मर्जर हो जाए उसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस या चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है, एंड प्री-मर्जर डिलीजेंस अपने क्या क्या बात करते हैं। अगेन समथिंग जिसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चारों क्वेश्चन आपको दिए गए ना गाइस, चारों में क्वेश्चन में आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दे सकते हो बिकॉज द आंसर इज वेरी वेरी डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने लिखना, स्टार्ट करें आंसर लिखना गाइस। डन, चलो लिखो। सेबी SAST regulations 2011, SEBI SAST regulations 2011 regulates the acquisition of large stakes in listed companies. Full stop. The regulations list down certain limits of holding in a listed entity which if breached requires the acquirer to give an open offer to the existing shareholders. Full stop. These trigger limits are first, acquisition of 25% of shares or voting rights, acquisition of minimum 25% of shares or voting rights, by the acquirer and its PAC, Second, acquisition of an additional 5% shares or voting rights
acquisition of an additional 5% shares or voting rights in any financial year if the acquirer already holds at least 25% stake in the target company. Third, acquisition of control in any other manner. Acquisition of control in any other manner. Full stop. Next paragraph. If a person breaches any of the above given limits, if a person breaches any of the above given limits, comma, they are required to follow the following steps. They are required to follow the following steps while giving the open offer. Number one, a public announcement is to be made on the day on which the transaction triggering the open offer limit, is breached. Point 2, within 5 days of the public announcement, a detailed public statement is to be published. Point 3, within 5 days of the detailed public statement, the draft letter of offer is to be filed with SEBI. Point 4, once SEBI gives its comments on the draft letter of offer, the final letter of offer is to be dispatched within 7 days. Next, the tendering period must be opened within 12 days from the date on which SEBI gives its comments,
SEBI gives its comments and should remain open for a period of 10 days. Stop. Next, once the shareholders have tendered their shares, comma, verification and completion of payment must be done within a period of 10 days from the closure of the tendering period. Done? From the closure of the tendering period. This was your 5 marks का क्वेश्चन जहां पे हम लोग को पूरे ओपन ऑफर का स्टेप्स बताना था. क्लियर हुआ गाइस? Done? Next question आ जाओ. Q has approached you to seek guidance on whether increase in voting rights due to buyback of shares attracts the obligation. लिखो. Question number 1B exemptions के ऊपर है. लिखो. While SAST regulations provides for different scenarios. You can add escrow account in the previous point. नहीं भी लिखा तो ओके 5 मार्क्स का क्वेश्चन. देखो यहाँ provides for different scenarios in which the acquirer is required to give an open offer. Provides for different scenarios in which the acquirer is required to give an open offer, comma, it also provides certain exemptions. From giving an open offer in situations listed under regulation 10. Listed under regulation 10. Full stop. One such situation is buyback of shares and increase in voting rights क्या आवाज नहीं आ रहा? And increasing voting rights pursuant to such buyback. ओके अभी ठीक है. चलो आगे लिखो. फुल स्टॉप. However,
in order to get an exemption in such cases, in order to get an exemption in such cases, the following condition must be fulfilled. The following conditions must be fulfilled. Number 1, the acquirer must not have voted. The acquirer must not have voted in favor of the buyback resolution. In favor of the buyback resolution. Number 2, voting must have been done by way of a postal ballot. Voting must have been done by way of a postal ballot. Number 3, buyback does not result in acquisition of control. Buyback does not result in acquisition of control. Full stop. Next paragraph. Next paragraph. Additionally, if the acquirer reduces its holding below the trigger limits, within 90 days of the buyback, comma, then also they will be exempt from making the open offer. चलो डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी, जहां पे आपको बस बताना था कि अगर बायबैक की वजह से आपकी ट्रिगर लिमिट टच होती है तो इन दैट केस आपको ओपन ऑफर देना होता है या नहीं। डन। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, राइट 1C, कैश डील एंड स्टॉक डील के बीच में डिफरेंशिएट करना है। लिखो, while making an acquisition या while doing a takeover, लिखो while doing a takeover, comma, the acquirer can pay the consideration either by cash or by issuing shares. Full stop. While the former मतलब जिसके बारे में पहले बात हुई है, तो while the former is known as cash deal, comma, the latter, LATTER, मतलब इसके बारे में बाद में बात हुई है,
The latter is known as a stock deal. ठीक है, full stop. Next line. Following are the benefits of cash deal. Following are the benefits of cash deal. Number 1, no dilution of equity holding, no dilution of existing holding, no dilution of existing holding. Number 2, certainty of a fixed payment, certainty of a fixed payment. Number 3, easier to evaluate and understand. Done. चलो नेक्स्ट लिखो, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डील, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डील. पहला पॉइंट, नो आउटफ्लो ऑफ कैश, नो आउटफ्लो ऑफ कैश from the acquirer, no outflow of cash from the acquirer. Number 2, no instant taxation, no instant taxation in the hands of the shareholders, in the hands of the seller कर दो, no instant taxation in the hands of the seller. Number 3, the shareholders get the benefit of upside of equity, get the benefit of upside of equity. Next paragraph, while making a choice between the two, जो क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है, ठीक है. while making a choice between the two, the following factors must be considered. Number 1, legal requirement. Number 1, legal requirement. Number 2, market conditions. Market conditions. Number 3, preference of the shareholders. Done. चला आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन. आपको बताना है कि मर्जर के बाद किस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं हम लोग कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को. ठीक है, लिखो यहाँ पे 1D. 1D. Once a merger transaction is completed, once a merger transaction is completed between two or more entities,
comma, the resulting company is required to take certain steps for post-merger integration. For post-merger integration. Full stop. These steps are: number 1, structural change considerations. Dash. While designing the scheme, the structural change considerations must be kept in mind. Structural change considerations must be kept in mind to avoid future problems. Number 2, pre-merger diligence. Pre-merger diligence. Dash. Pre-merger diligence must be carried out pre-merger diligence must be carried out to analyze the suitability of the companies, to analyze the suitability of the companies merging together. Point 3, human aspects. Since employees of two different companies are going to work together post merger, comma, activities should be carried out to increase cooperation and decrease hostility amongst them. Fourth point, fourth point, 3 phases of change. याद है आया था 3 phases of change? 3 phases of change. Dash. The employees of both the organizations must be taken through the 3 phases of change, that is awareness, comma, acceptance,
comma and adaptation for a smooth post-merger integration. For a smooth post-merger integration. Done? Last point. Cultural aspects. Last point, cultural aspects. The work culture, comma, value system, comma, internal policies, etc. of both the merging entities, must be synchronized. डन. यहां पे अपना पहला वाले क्वेश्चन के चारों पार्ट जो है वो होते हैं कंप्लीट. क्लियर हुआ सबको? चलिए अब आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2A. यहां तक क्लियर हो सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोलता है? टू क्लासिफाई अ मर्जर वन नीड्स टू लुक एट द नेचर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व्ड एंड द रैशनल बिहाइंड द डील. The main types of merger are co-generic, horizontal, vertical, conglomerate and reverse. Classify the following into the mergers and give justification for the same. पहला, फेसबुक एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम. क्वेश्चन कितना मस्त पूछा गया है. मर्जर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्विजिशन का क्वेश्चन, मतलब ऊपर मर्जर के बारे में बात किया जा रहा है टाइप्स में, एंड यहाँ पे एक्विजिशन यूज किया गया है. बट ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कौन सा टाइप का मर्जर होगा ये? दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल मर्जर. लिखो, ऐसे लिखो 2A. फर्स्ट, फेसबुक एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम. फेसबुक एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम. गाइस हम तो नॉर्मल ऐसे यहाँ पे लगा के ले रहे हैं. देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर. This is an example of horizontal merger as both the companies, Facebook and Instagram, operate in the same market, comma, provide the same services, comma, and are competitors of each other. डन. चलो नेक्स्ट, सेकेंड वाला लिखो. कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर एंड यूपीएस मैन्युफैक्चरर. जो कंप्यूटर बनाता है यूपीएस बनाता है, दे आर नाइदर अ वर्टिकल इंटीग्रेशन है वहां पे कोई ना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है. दीज आर पीपल जो लोग, हाँ इन्वर्जन नहीं था ये एक्विजिशन है, बट अब एग्जांपल दिया है तो क्वेश्चन दिया तो लिखना तो पड़ेगा ना. सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? ये ना तो एक दूसरे के बायर सप्लायर ना कंपेटिटर्स है, बट दे डील विद द सेम कंज्यूमर्स. तो ये हो जाएगा कोजेनरिक मर्जर. लिखो सेकंड वाला. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोजेनरिक मर्जर
as the computer system manufacturer, as the computer system manufacturer and the UPS manufacturer both deal with the same consumer base. Both deal with the same consumer base. डन. लास्ट, अब ये तो जीके वाला क्वेश्चन हो गया. जिनको पता है बर्कशायर हाथवे एंड ल्यूब्रिजॉल किस में काम करता है वो इसको आंसर कर पाएंगे, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे. लिख लो आप लोग. बर्कशायर हाथवे आपका काम करता है इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड ल्यूब्रिजॉल काम करता है इन केमिकल सेक्टर, है ना. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपने, लिखो. बर्कशायर हाथवे इज अ कंपनी, बर्कशायर हाथवे इज अ कंपनी that operates in the insurance sector, that operates in the insurance sector while Lubrizol is a company that operates in the chemical market. Since both the markets are unrelated to each other, since both the markets are unrelated to each other, this is an example of conglomerate merger. This is an example of conglomerate merger. क्लियर हुआ सबको. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2A. बहुत सिंपल सा था, आपको बस क्लासिफाई करना था. डन. क्वेश्चन नंबर 2B, दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल सेशन में करके रखा हुआ है. उसके डॉक्यूमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू एंड गुडविल निकालना था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2C, अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यहाँ पे आपके एसएससी रेगुलेशन का जो रेगुलेशन 8 है, ऑफर प्राइस वाला रेगुलेशन, उससे रिलेटेड आपको बताना था कि कौन सा ऑफर प्राइस, मिनिमम ऑफर प्राइस होने वाला है. डन. तो दिस इज अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में कर रखा है. ठीक है. आ जाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 2D. लेट्स रीड इट. Under a scheme of amalgamation, Acme Inc. is being merged with Beta Corporation, where Acme Inc.'s assets and liabilities will be transferred to Beta Corp, resulting in Acme Inc. dissolving, with shareholders receiving a specific exchange ratio of Beta Corp. Shares for their Acme Inc. shares aiming to Beta Corp shares for their Acme Inc. shares aiming to achieve operational synergy and cost saving by combining operations under one entity. In respect of this, the managing director of the transferee company मतलब कंपनी जो है आपकी ये एक्मे इंक. ठीक है. नहीं सॉरी, एक्मे इंक नहीं, बेटा. ठीक है. ट्रांसफरी की बात हो रही है ना. तो बेटा कॉर्प की जो मैनेजमेंट है, they have approached you as a practicing company secretary for advice on the list of key documents required to be filed in the scheme of amalgamation. आपको बताना है इस मैटर में एडवाइस देना है. ठीक है. तो बेसिकली यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द ट्रांसफरी कंपनी. लिखो लिखो. While filing for a scheme of amalgamation, while filing for a scheme of amalgamation, the transferor and the transferee company, the transferor and the transferee company are required to attach and file a number of documents full stop. Some of these documents are, देखो सबसे पहले सबसे बेसिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नंबर 2 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
Number 3, board resolution. Number 4, shareholders resolution. Number 5, list of shareholders. Number 6, creditors resolution along with the list of creditors. Number 7, auditor's certificate. Number 8, valuation report. Number 9, audited financial statements. Number 10, scheme of amalgamation. 10 पॉइंट भी लिखे तो काफी है, और ये 10 पॉइंट आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, आपको अलग से इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का चारों क्वेश्चन। 2 हम लोगों ने प्रैक्टिकल में करके रखा है, 2 हम लोगों ने अभी कर लिया। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यहाँ पे अपना 40 मार्क्स का क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2A एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन है, वो भी था। उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आप कोई भी 4, जिसमें से अगेन आप 4 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार इन क्वेश्चन को भी फटाक से देख लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देखो। As per the scheme of arrangement, software undertaking of S India is proposed to be transferred to S Software under section 391 and 394 of Companies Act 1956. भगवान जाने आपको क्यों 1956 का क्वेश्चन पूछा गया। One of the consideration of the scheme was that any excess in the value of net assets of the software undertaking transferred to the resulting company shall be applicable for distribution to the shareholders of the resulting company. RD of Northern Region has raised objection in the affidavit filed with the High Court. अच्छा हाई कोर्ट आ गया, stating that excess, if any, in the value of net asset of the software undertaking should be adjusted to the capital reserve as prescribed on the AS 14 and not to the general reserve as proposed in the scheme of amalgamation. Decide the matter with reference to a decided case law. ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दिया गया, ठीक है। इन लोगों ने पहले का कोई एक क्वेश्चन कभी किसी टाइम में पूछा होगा जब 2013 के पहले वाला एक्ट चल रहा था, बस वही क्वेश्चन उठा के आपके इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने उसको आंसर कैसे करेंगे? वी विल राइट वट एवर वी नो अबाउट AS 14 एंड AS 14 के अंदर किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है ऑफ एनी डिफरेंस इन कंसिडरेशन। लिखो। अच्छा वेट, दिस इज, हाँ लिखो, दिस इज द डीमर्जर। देखो, द करेंट क्वेश्चन is related to a demerger transaction. Is related to a demerger transaction wherein the regional director is suggesting application of AS 14. The regional director is suggesting application of AS 14 to the demerger transaction. Full stop. First and foremost, this position of the regional director is not sustainable under law, because the Delhi High Court in the case of Sony Software Limited, has already held
has already held that AS 14 is not applicable to demergers. That AS 14 is not applicable to demergers. Full stop. Next paragraph. Therefore, the position of the regional director is not sustainable and the companies will be required to treat the difference in consideration in the value of net assets कर दो, in consideration नहीं, the difference in the value of net assets as per the other applicable standards, other applicable accounting standards, as per the other applicable accounting standards. नेक्स्ट डन. चलो ये वाला हो गया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2. यहां क्या बोला जा रहा है? आपका बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इज विलिंग टू मर्ज विथ हमारा बैंक, अ स्मॉल रीजनल बैंक. आपका बैंक wants to expand its footprint in rural sector where Hamar bank has a strong presence. Merging with Aapka bank will provide better technology and financial boost to Hamar bank. Here the amalgamation is to take place between two banking companies. The Reserve Bank has discretionary powers to approve the voluntary amalgamation of two banking companies under section 44A of the Banking Regulation Act. You are required to enumerate the provisions of section 44A of the Banking Regulation Act. चलो ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स वाला क्वेश्चन है, लिखो. द मर्जर ऑफ two banking companies is governed under section 44A of the Banking Regulation Act. Under section 44A of the Banking Regulation Act, which lays down the following steps. Number 1, the scheme must be approved by a majority number of shareholders of both the banks, holding at least 2/3 of shares by value. In a duly convened general meeting. Second step, the notice of this meeting must be published in two newspapers at least two newspapers
at least once in 3 consecutive weeks, at least once in each week for 3 consecutive weeks, at least once in each week for 3 consecutive weeks, for 3 consecutive weeks. Next point, once approved, the resolution is to be shared, the scheme is to be filed with the RBI. Next point, any dissenting shareholder must be given an exit opportunity, on the terms specified by RBI. On the terms specified by RBI. Next point, once RBI is satisfied that the interests of all the stakeholders are taken care of, comma, it can by an order approve the scheme. It can by an order approve the scheme. Done. Last, a copy of this approval order of RBI, is to be filed with the ROC. Done. तो ये था आपका क्वेश्चन जहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि आरबीआई किस तरीके से आपके बैंक के मर्जर को अप्रूव करती है. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोला जा रहा है सुबोध कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड टू डीमर्ज इट्स फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस इनटू सेपरेट एंटिटी. Subodh Food Limited. Demerger allowed SCPL to concentrate on its core product. Demerger took place within the meaning of Income Tax Act. N, who was holding 100 shares of SCPL, was allotted 100 shares in Subodh, along with the shares in the resulting company as the swap ratio. N seeks your advice to calculate the following as he intends to transfer some of his shares after demerger. पहला, cost of acquisition, दूसरा in resulting company, cost of acquisition demerged company and period of holding for the result company. लिखो. When a company demerges itself, हाँ ना, गजब का इमोशनल ब्लैकमेल है श्रेया. When a company demerges itself and forms a new company, comma, the shareholders of the demerged company receive certain shares
of the resulting company. Full stop. Following are the provisions of the Income Tax Act Following are the provisions of the Income Tax Act with respect to these shares. Number 1, cost of acquisition of shares in resulting company. Dash. The cost of acquisition of shares in the resulting company is calculated on the same ratio, is calculated by applying the same ratio, in which the assets of the company were divided during demerger to the cost of acquisition of shares in the demerged company. Done. Second point, cost of acquisition shares in the demerged company. Cost of acquisition of shares in the demerged company. Dash. It is reduced in the same ratio. In which the assets of the demerged company is distributed between the demerged company and the resulting company. Last, period of holding of shares of the resulting company. लिखो, the period of holding of shares of the demerged company, of the resulting company, the period of holding of shares of the resulting company will be the same as the period of holding of shares of the demerged company. डन. चलो, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट वाज 2A का क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स रीड दिस. ABC company registered under Companies Act
providing IT and allied services, wants to merge with its USA-based holding company, Silicon Valley Incorporated. MD of ABC seeks your advice on the matter, citing the recent amendments, etc. If any. Lego. Lego. When an Indian company, that is absolutely normal. ये आपका लास्ट डे तक चलता रहेगा कि आप जब रिवीजन करके 3-4 दिन हो जाएगा तो आपको लगेगा कुछ नहीं आ रहा है. दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. Lego, question number 4. When an Indian company merges with a foreign company, comma, the transaction is known as a cross-border merger. The transaction is known as a cross-border merger and is governed under section 233 of the Companies Act. ठीक है, full stop. If as a result of such a transaction, if as a result of such a transaction the company that is formed is a foreign company, the company that is formed is a foreign company, then it is known as an outbound merger. Then it is known as an outbound merger. While if the resulting company is an Indian company, then it is known as an inbound merger. Full stop. Next paragraph. In the instant case, the Indian company that is ABC Limited is merging with its holding company Silicon Valley Incorporated, Silicon Valley Inc, which will result in the absorption of the Indian company by the foreign company. Full stop. This will be a case of outbound merger. This will be a case of outbound merger and ABC Limited will have to follow, will have to ensure the following.
ensure the following. Point 1, take prior approval of the RBI. Take prior approval of the RBI. Point 2, follow requirements of section 234. Follow requirements of section 234 of the Companies Act. Point 3, follow requirements of Rule 25A of the Companies Compromise Arrangement and Amalgamation Rules. Of the Companies Compromise Arrangement and Amalgamation Rules. Done? यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे जून 25 में, वो होते खत्म. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ गाइस? टाइम के हिसाब से देखें तो अपने सही टाइम पे ही चल रहे हैं. 1.25 घंटा हुआ है, इसमें हमारे 40 मार्क्स की कंप्लीट हो गए आंसर राइटिंग. डन? चलिए अब अपने शुरू करते हैं पार्ट 2. पार्ट 2 दैट इज वैल्यूएशन वाला पार्ट. पहला वाला क्वेश्चन जो है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट. दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हो गए, तो 3 के दोनों पार्ट प्रैक्टिकल में हो गए. अब आते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4A किस बारे में बात करते हैं? देखिए, PQR Limited is the process of getting securities listed. Company needs to get valuation done. Board of directors have proposed the name of MS Sunidhi and Associates partnership firm to be appointed as valuers. In the light of provisions of Rule 3 of registered valuer, a partnership firm becomes ineligible to be appointed as a registered valuer in certain circumstances. आपको बताना है state the circumstances जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकती है. डन? लिखो लिखो क्वेश्चन एवरीबॉडी. As per Rule 3 of the Company's Registered Valuers and Valuation Rules 2017, केवल आपको स्टेट करने बोला गया सर्कमस्टेंसेस, तो बस लिखना है अपने को क्या होता है. ठीक है, लिखो. As per the Rule 3 of the Company's Registered Valuers and Valuation Rules 2017, comma, following are the disqualifications of a partnership firm from being appointed as a registered valuer. नहीं, ऐसा लिखो इसको. एक्चुअली फॉलोइंग आर द कंडीशंस, ये वाला लाइन काट दो, फॉलोइंग के बाद वाला ये लिखो भाई. फॉलोइंग आर द कंडीशंस that a firm must fulfill in order to get appointed as a registered valuer. In order to get appointed as a registered valuer. Number 1, the objective of the partnership firm must be to provide only valuation and related services. Number 2, the entity must not be undergoing
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और बैंक्रप्सी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और बैंक्रप्सी प्रोसेस। नंबर 3, all the partners must be registered as registered valuers, sorry, must be eligible, all the partners must be eligible to be registered as valuers, to be registered as registered valuers. Number 4, at least 3 of the partners must be registered as registered valuers. तो ऊपर वाला बोला गया all the partners must be eligible, जिनमें से at least 3 must be registered as registered valuers. And last, at least one of the partners एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा गया ना वैल्यूएशन फर्म का, तो यही लिखना होगा और क्या लिखना होगा, रजिस्टर्ड वैल्यू और एंटिटी वाले क्राइटेरिया लिखना होगा ना। चलो, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स must be registered as a valuer must be registered as a valuer for the same asset class for which valuation is to be done. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, इफ एनी एंटिटी fails to fulfill any of the above criteria, comma, then they will be disqualified from being appointed as a registered valuer. डन, ठीक है। तो यहाँ आपको डिस्क्वालिफिकेशन पूछा था, आपके बुक में या लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख लिया एंड बता दिया अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, खत्म, डन। आ जाओ वैल्यूएशन के लास्ट क्वेश्चन में। कंपनी एक्स ओन्स मेनी बिजनेसेस एंड इट ऑल्सो ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिविजन दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Y is interested in acquiring the entire manufacturing division as a going concern. In the sale agreement, X transfers its entire manufacturing division, including all assets and liabilities, to Y. No values are assigned to respective assets and liabilities. The lump sum consideration is agreed upon between X and Y. Discuss the category of the transaction and discuss the rationale behind this transaction. आपको बताना ये जो transaction है ये क्या है और क्यों करते लोग ऐसा transaction, बताना। तो ये transaction कौन सा है, बताने, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, इट इज अ स्लम सेल, है ना। तो लिखो, अंडर इंडियन लॉज the transfer of an undertaking as a going concern for a lump sum consideration
as a going concern for a lump sum consideration is known as a slump sale. Is known as a slump sale. Full stop. In the instant case, company X has transferred the entire manufacturing undertaking to company Y as a going concern for a lump sum consideration. Therefore, full stop के बाद therefore this transaction can be categorized as a slump sale. डन. नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है क्यों करते लोग स्लम सेल से. लिखो स्लम सेल इज डन बाय कंपनीज because it provides the following benefits. Number one, सबसे important, reduction in transaction cost. Number one, reduction in transaction cost. Number two, increase या reduction का उल्टा increase in deal value. Number three, lesser compliance and overhead expenses. ठीक है. लास्ट, टू कैरी आउट, उसके बाद नेक्स्ट लिखो टू कैरी आउट स्लम सेल the following process is to be undertaken. Number one, identification of the potential buyer / seller. Identification of potential buyer / seller. 2, due diligence of the undertaking being sold. Number 3, valuation and pricing. Number 4, agreement and completion of sale.
यहाँ पे गाइस अपना होता है वैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी खत्म। विद दिस वी आर डन विद 60 मार्क्स ऑफ आर पेपर। 60 मार्क्स पेपर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने जा रहे हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हम लोग इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। शुरू करें गाइस। चलो लेट्स सी, स्टार्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5A। ठीक है, XYZ लिमिटेड वाज अंडरगोइंग CIRP व्हाइल द कंपनी वाज अंडरगोइंग CIRP। तो जब CIRP चल रहा था, CIRP के दौरान BSE sought to take legal action against the company for non-compliance. BSE wanted to recover the penalty amount from the company, failing which it warned the company of potential delisting. As RP of the corporate debtor discussed, citing relevant case laws, provisions of IBC, whether BSE as a stock exchange can exercise its regulatory powers against the company. How can the Bombay Stock Exchange recover amount of penalty from XYZ Limited? लिखो, कर सकता है क्या यहाँ पे रिकवर? नहीं कर सकता है ना? ये अपना बस, हाँ, तो नहीं कर सकता है। बस क्या किया जा सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे वो अपना पेनल्टी अमाउंट मांग सकता है, फाइनलाइज करके रख सकता है, बट पैसा उसको बाद में ही मिलेगा एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो लिखो when CIRP is initiated against a company, when CIRP is initiated against a company, comma, a moratorium period is imposed on the company. A moratorium period is imposed on the company during which any type of recovery of amount, or penalties imposed by sectoral regulators is restricted from being recovered. Is restricted from being recovered. Full stop. Next paragraph. A similar situation was faced by the Supreme Court. A similar situation was faced by the Supreme Court in the Sri Bhavani paper mills case. In the Sri Bhavani paper mills case, wherein the court held that regulators like stock exchanges are debarred from exercising their regulatory powers and recovering penalties from companies undergoing CIRP. Full stop. The court held that these regulators can however finalize the penalty amount
finalize the penalty amount and claim that money as operational creditor. And claim that money as the operational creditors. Full stop. In the instant case also, Bombay Stock Exchange would not be permitted. Bombay Stock Exchange would not be permitted to recover the money from XYZ Limited, to recover the money from XYZ Limited during the pendency of CIRP, but will be allowed to recover it later, will be allowed to recover it later as an operational creditor, as an operational creditor. डन, सॉर्टेड हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5B, आगे बढ़े अपने. आइए. An application filed by an operational creditor under section 9 of IBC was admitted by NCLT and Mr. Goel was appointed as the interim RP. Section 20 of the code mandates the interim RP to run the management of the operations of the company as a going concern. In light of the provisions of this, mention the authorities availed. So powers of company to run the power of interim RP to run the company as a going concern. Section 20 के जो पॉइंट है एग्जैक्टली वही लिखना है. तो लिखो इसको. As soon as CIRP is initiated, as soon as CIRP is initiated, against a corporate debtor, and interim RP is appointed, comma, the powers of the board of directors are suspended. The powers of the board of directors are suspended and vested in the interim RP. And vested in the interim RP who is responsible to run the business, of the corporate debtor as a going concern. Full stop. To fulfill this obligation, the interim RPs are given. The interim RPs are given the following authorities under section 20. The following authorities under section 20. Number 1, to appoint professionals. Number 1, to appoint professionals. Number 2, to enter into contracts on behalf of the company.
to enter into contracts on behalf of the company. Number 3, to issue instructions to the personnel and employees of the company. To issue instructions to the personnel and employees of the company. Number 4, to raise interim finances. Number 4, to raise interim finances. Number 5, to take other actions to keep the company as a going concern. To take other actions necessary to keep the company as a going concern. Done? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5B. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5C. क्लियर हुआ 5B? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5C. SPM Bank extended credit facilities to Anuj Constructions, a proprietary firm. Geeta Steel Limited, the guarantor, provided guarantee for credit facilities to Anuj Constructions. Anuj Constructions defaulted in repayment and hence facilities were declared as NPA. Anuj Constructions repeatedly assured the bank to pay the outstanding amount of 11 crore 45 lakhs but failed, and SPM Bank issued notice to Anuj Constructions. SPM also issued notice to the guarantor under section 4 of the IBC demanding outstanding amount. Failing to receive any positive response from either of the parties, the bank proceeded to file an application under section 7 for initiating CIRP against the guarantor, Geeta Steel Limited. The board of directors argued that section 7, an application can be filed by financial creditor only against the corporate person. Section 7 cannot be legitimately invoked by bank against the creditor, against the guarantor with respect to the guarantee offered by them in respect to the Anuj Construction, who is the principal borrower, वगैरह वगैरह. In the background, discuss corporate person and corporate debtor under provisions of IBC and discuss the tenability of arguments put forward by the board of directors. अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पे corporate person, corporate debtor का definition पूछा गया, लिखो. As per section 5 of the IBC, नहीं sorry, section 5 नहीं, corporate person section 2 में दिया गया. हाँ, as per section नहीं 5 में दिया गया. As per section 5 of the IBC, a corporate person means any company incorporated under the Companies Act or any other special act or an LLP incorporated under the LLP Act or an LLP incorporated under the LLP Act but does not include financial service providers. But does not include financial service providers. ठीक है, full stop. Next line. A corporate debtor as defined under IBC means any corporate person who owes certain amount to its creditors. Full stop. Next, in the instant case, SPM Bank
that is the financial creditor is trying to initiate CIRP, against Geeta Steel Limited, dash a company who gave guarantee for a loan taken by a sole proprietorship. In such cases, although the principal borrowers are not covered, although the principal borrower is not covered under part 2 of IBC, the corporate guarantors are still covered under part 2 and are considered to be corporate debtors for such loans. Full stop. This is because the guarantors are jointly and severally liable. To ensure the repayment of loan. Full stop. Thus, in the instant case, the arguments put forth by Geeta Steel Limited, the arguments put forth by Geeta Steel Limited would not sustain as CIRP can be initiated against them in the capacity of they being corporate guarantors, for the loan. समझ में आया सबको? क्लियर? डन गाइज? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज 5D. 5 मार्क्स अगेन क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट. COC of Golconda Industries Limited approved a resolution plan by 100% voting on 17th of Jan 2024. Thereafter, the RP submitted the application for approval with the NCLT. During pendency of the application,
The ex-promoter of Golconda Industries submitted revised settlement proposal under Section 12A of the Code and filed an application to NCLT to seek the resolution in abeyance. Application filed by the ex-promoter was rejected by NCLT, therefore he filed an appeal with the NCLAT. In the light of provisions of IBC, whether an application under 12A can be entertained after approval of resolution of plan by COC and filing of application and after filing of application with NCLT. Cite relevant case laws and discuss the merit of appeal filed by the ex-promoter. देखो क्या हो सकता है, एक बार COC ने आपके रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करके NCLT के पास भेज दिया, उसके बाद विड्रॉल का एप्लीकेशन फाइल हो सकता है क्या? द आंसर इज नहीं हो सकता है. लिखो सेक्शन 12A of the IBC, section 12A of the IBC provides for different situations in which an application can be filed, for withdrawal of CIRP. For withdrawal of CIRP. Full stop. Section 12A envisages three situations in which CIRP can be withdrawn. Number 1, before acceptance of application. Number 2, after acceptance of application but before constitution of COC. After acceptance of application but before constitution of COC. And number 3, after the constitution of COC. After the constitution of COC. Next paragraph. However, the NCLT and NCLAT have held in multiple cases that withdrawal of CIRP can be permitted only up till the time COC approves the resolution plan. Full stop. This means that once COC approves the resolution plan, comma, CIRP cannot be withdrawn after that. Full stop. In the instant case, next paragraph में, in the instant case
since the COC of Golconda Industries have already approved a resolution plan, and sent it to NCLT for approval, comma, the CIRP can now not be withdrawn. The CIRP cannot be withdrawn now. Therefore, the appeal filed by the promoters will fail. समझ में आया सबको? डन। अब आप एक चीज पे ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे आपको केस लॉ का नाम नहीं लिखवाए, ठीक है? क्यों? बिकॉज इतने सारे केस लॉज आप CRVI में याद करके नहीं जा सकते हो। अगर यही IBC का पेपर होता ना तो हम केस लॉ का नाम खोज के आपको लिखवाते, बट इन सारे पेपर्स में CRVI में आप केस लॉज का नाम याद करके नहीं जा सकते हो, तो इसलिए ऐसे केसेस में अपने किस तरीके से आंसर लिखते हैं ये हम आपको लिखवा दिए। चलेगा सबको? डन। अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 या 6A दो ऑल्टरनेट क्वेश्चंस है। अपने क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चंस को लिखेंगे और 6A का हम बस डिस्कस करके आपको बता देंगे आंसर क्या होगा, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिए इंसॉल्वेंसी में। चलेगा सबको? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें सब लोग। क्लियर है? आइए। A director of company in CIRP had moved the honorable NCLT seeking the right to participate in the meeting of COC and access all the documents, information, including the resolution plans being discussed. NCLT held that directors have a right to attend the COC meetings. However, they cannot receive information that is considered confidential, including the resolution plan. Thereafter, directors filed an appeal for treating papers as confidential by the RP. Appeal decision of NCLT was upheld. Directors moved to the Supreme Court, challenging the decision of the appellate tribunal. Discuss the matter. लिखो 29 में मेंशन क्यों करेंगे वहां पे बाबू? जब वहां पे विड्रॉल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस खुशी में हम 29 में जाएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और जो पूछा जा रहा है उतना ही लिख के आओ। 29A के बारे में है ही नहीं। हाँ, आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है, प्रमोटर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पूछा गया है नहीं ना? जो पूछा गया अपने को बस वही लिख के आना है, क्योंकि उसी पे मार्क्स मिलेगा, एक्स्ट्रा लिखने पे मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ IBC, as per the provisions of IBC, the notice of the meetings of COC are to be sent to number 1 members of the COC, number 2 suspended board of directors, and number 3 operational creditors or their representatives. Number 3 operational creditors or their representatives if their debt is more than 10% of the total debt. If their debt is more than 10% of the total debt. Full stop. Next paragraph. While all the above mentioned people are permitted to attend the meeting, while all the above mentioned people are permitted to attend the meeting, comma, only the members of the COC are allowed to participate in it.
are allowed to participate in it. Full stop. However, nowhere in the IBC 2016, nowhere in the IBC 2016 has it been written that the notice given to the above mentioned people would also differ. Full stop. In the case of Vijay Jain versus Standard Chartered Bank, in the case of Vijay Kumar Jain versus Standard Chartered Bank, comma, the Supreme Court held that although the directors are not allowed to participate in the meetings of the COC, comma, the notice sent to them should be identical to the notice sent to the members of the COC, and must contain all those documents including the resolution plans that are contained in the notice sent to the members. Full stop. Thus, in the instant case, the Supreme Court would overturn the judgment passed by NCLAT yes same way, ठीक है, and the appeal will be allowed. Done. This was the first question. Next question. While the insolvency professionals assist in the insolvency resolution proceedings envisaged in the code, the information utility collects, collates, authenticates and disseminates financial information. Enumerate the obligation of information utility as per provision of 214 of IBC. बहुत सिंपल है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. लिखो, कैसे लिखेंगे, लिखो. Information utilities, question number 6B everybody. Information utilities are entities that are required to collect, authenticate and disseminate
collect, collate, authenticate and disseminate guys, can you all see me? YouTube वालों क्या दिख रहे हैं हम आप सबको? ऑनलाइन वालों कैन यू ऑल सी मी? चलो 3 क्वेश्चंस बाकी है तो अपने कंटिन्यू कर लेते हैं. अच्छा कहां तक लिखवाए थे हम? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6B कर रहे थे राइट. 6B कहां तक किए थे हम लोग? चलो परफेक्ट. आई हैव चेंज क्लासेस तो अब यहाँ पे लाइट नहीं जाएगा तो अपने कंटिन्यू करके इसको फिनिश ही करते. हाँ तो हम लोगों ने लिखा था information utilities are bodies that are required to collect, collate, authenticate and disseminate financial information of companies for uses as per the IBC 2016. For uses as per the IBC 2016. Full stop. Following are the obligations and functions of information utilities. Following are the obligations and functions of information utilities. Number 1, create and store information in a universally accessible format. Create and store information in a universally accessible format. Number 2, accept electronic submission. Accept electronic submission of information. Number 3, comply with minimum standards, minimum quality service standards. Comply with minimum quality service standards. Number 4, get the information received authenticated. Get the information received authenticated. Number 5, disseminate information to people. Disseminate information to people who have a legal right to get that information. Who have a legal right to get that information. And number 6, publish statistical analysis of data. Publish statistical analysis of data. क्लियर हुआ सबको? तो ये बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था. क्लियर हुआ? चलिए आते अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6C. Augusto Industries Limited, a medium-sized company, had been facing financial difficulties for the past few years due to poor management and inability to cope with costs. Also, company's funds were being used for personal expenses for directors like purchase of high-end vehicles and other non-business related expenditure. These actions led to significant depletion of company's cash reserves. Company had to finally face liquidation order from NCLT. NCLT appointed Jayat Nanda as a liquidator to wind up the company and liquidate its assets. ठीक है? आगे पढ़ो. However, it came to the light that Mr. Jayant Nanda had one of the major creditors and is giving preferential treatment to the company by prioritizing its claims over other creditors and probably negotiating asset sales at a lower price.
A group of creditors filed a petition in the Delhi High Court for removal of Jayant Nanda, accusing him of conflict of interest. Discuss the validity of petition. बहुत simple सा है. We just have to write down the grounds on which a a liquidator can be removed under Companies Act. अब इसमें कुछ बच्चों का मैंने देखा है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब दिस इज फ्रॉम द चैप्टर वाइंडिंग अप बाय द एनसीएलटी, जहां कंपनीज एक्ट की बात होती है. बच्चों ने देखा लिक्विडेशन, वाह आईबीसी के अंदर का लिख के आ गए. इट्स नॉट एन आईबीसी का क्वेश्चन, इट्स अ कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो लिखो कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट contains certain provisions which provide for removal of liquidator on certain grounds. Full stop. These grounds are number 1, misconduct or misfeasance. Misconduct or misfeasance. Number 2, fraud. 8:30. Number 2, fraud. Number 3, professional incompetence or inability to act as a liquidator. Professional incompetence. Number 4, inability to act as a liquidator. Inability to act as a liquidator. And number 5, conflict of interest. ठीक है, नीचे लिखो. The facts of the instant case suggest that there is a conflict of interest. There is a conflict of interest of Mr. Jayant Nanda, as he had had prior relationships. With one of the stakeholders. Full stop. Additionally, the allegations put forth by the creditors against Mr. Nanda full stop, comma, if proven would amount to misconduct. Full stop. Therefore, on these grounds, Mr. Jayant Nanda can be removed as a liquidator. Mr. Jayant Nanda can be removed as a liquidator. Clear हुआ सबको? Done?
नहीं यार, यहां तो मस्त चल रहा है। चलो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6D. Let's read it together. Bhavna Clothing Limited, the company was placed under CIRP under IBC in Jan. Mr. N was appointed as the interim RP and the COC was also formed. During CIRP, IRP was required to send notices to the members of COC, members of board of directors and other participants. In April 24, Mr. Goswami, a participant other than the member of COC, raised an issue in the meeting of creditors that he had not received any prior notices of CIRP meetings and questioned the legitimacy of decisions taken in the meeting. Highlighting the provisions of Regulation 20 of CIRP regulations relating to service of notice by electronic means, decide about the legitimacy of decisions taken in the meeting Mr. Goswami had missed. Is there any obligation on the part of interim RP for updation of email while service of notice by electronic means? ठीक है ना, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक मिस्टर गोस्वामी थे, he was not a member of the COC but still he had a right to participate to attend the meetings of the COC. तो हो सकता है या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होगा या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा. उसके कुछ मीटिंग्स छूट गए बिकॉज उसको नोटिस नहीं मिला एंड देयरफॉर वो अब आके बोल रहा है कि पुराने जितनी भी मीटिंग्स हुई है सब में जो भी चीज डिसाइड किया था वो सारी चीजों को अब आपको वापस डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज वो सारे इलीगल हो गए क्योंकि मेरे को नहीं मिला था कोई भी नोटिस. ठीक है, तो अब आप लॉजिकली मेरे को सोच के बताओ, दिस पर्सन डिड नॉट हैव एनी राइट इन द डिसीजन मेकिंग एनीवे. ठीक है, वो ऐसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था और उसका कोई भी राइट नहीं था डिसीजन मेकिंग में. तो क्या उसको नोटिस नहीं मिला, मिलने से मेरे जितने डिसीजंस लिए गए वो इनवैलिडेट हो जाएंगे क्या? मेरे जो भी डिसीजंस लिए गए वो इनवैलिडेट हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसको नोटिस मिल भी जाता तो भी आके वो डिसीजन लेने में कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाता. राइट, तो लिखो, द नोटिस ऑफ सीओसी मीटिंग्स, the notice of COC meetings are to be sent to the members of the COC, are to be sent to the members of the COC, the members of the suspended board of directors, and the operational creditors or their representatives and the operational creditors or their representatives if their debt is more than 10% of the total debt. Full stop. While all of them have a right to attend the meeting, while all of them have a right to attend the meeting, only the members of the COC have a right only the members of the COC have a right to participate and take decisions during the meeting. Full stop. जो आंसर्स है वो स्टार्ट कैसे करें बाबू? 2 दिन से वही तो सिखा रहे हैं हम लिखवा के. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द इंस्टेंट केस, Mr. Goswami who had a right to attend the meetings of the COC, Mr. Goswami who had a right to attend the meeting of the COC failed to receive notices of the meetings. Full stop. It has been clearly specified in the question, in the facts,
It has been clearly specified in the facts that Mr. Goswami was a participant that Mr. Goswami was a participant other than the member of the COC. Full stop. This means that even though Mr. Goswami had the right to participate, had the right to attend, even though Mr. Goswami had a right to attend the meetings, comma, he could not have possibly made any difference. He could not have made any difference to the decisions taken in those meetings. To the decisions taken in those meetings. Full stop. Thus, the decisions taken in the meetings that Mr. Goswami missed are all valid. Done? डन सॉर्टेड. चलिए, ये था आपके क्वेश्चन 6 के चारों पार्ट्स. अब आता है आपका क्वेश्चन 6A. अब ये क्वेश्चन 6A के जो चारों क्वेश्चन है ना, इनको बस अपने डिस्कस कर लेंगे, हम लिखवाएंगे नहीं, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी आईबीसी के बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए. ठीक है, तो आ जाओ. पहला, टू एलिविएट द कंप्लायंस बर्डन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, अ सेट ऑफ फॉर्म्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म has been created by IBBI to capture the details of voluntary liquidation process. Highlight the advantages and documentation with timelines in view of the recent amendment via IBBI circular dated 28 June. आपके amendment में VL1, VL2, VL3, VL4 आया ना, यहाँ पे वो मेंशन करना है. Voluntary liquidation के से related जो भी आपके फॉर्म्स है, देखो आपको amendment में दिखा दे रहे हैं. कहाँ गया CRVI का अमेंडमेंट्स, ये देखो, ये खुला हुआ है. ठीक है, तो ये आपका 28 जून 2024 वाले फॉर्म्स की बात हो रही है ना, तो इन्हीं फॉर्म्स की बात हो रही है. यही फॉर्म्स अपने को लिखना था. फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म में क्या दिया जाता है, एंड फॉर्म कब फाइल करना है. सिंपल, डन. तो इसमें बस डायरेक्टली अपने को वही लिखना था. नेक्स्ट, a company is undergoing PPIRP under IBC. Company has appointed an interim RP to oversee the insolvency process. Management is concerned about their role in vesting the management of the interim RP during the insolvency process. Discuss the provisions of vesting management of corporate debtor with resolution professional, if any. PPIRP का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि in normal cases, when the PPIRP is going on, the management of the company is not vested in the RP. In fact, the management of the company remains with the corporate debtor and the older management of the corporate debtor, who are required to manage the company along with the RP. However, if during the pendency of PPIRP, the creditors file an application with the NCLT and the NCLT is satisfied that there has been a fraud or gross mismanagement by the management of the company, then they can transfer the management parts of the company to the resolution professional. The transfer investing of professional. ठीक है. Next, Sujan Technologies Private Limited faced serial allegations of financial management, excessive debt, and non-compliance. Non-compliance issues led to inspection investigation. Inspection of the company was completed and investigation report was submitted. Several irregularities relating to falsification of accounts are reported and hence prosecution under Companies Act was initiated. As the investigation is already complete, Board of Directors filed an application for removal of name of the
Investigation is already complete. Board of directors filed an application for removal of the name of the company. Company has not continued any business or operation for 2 years. ROC rejected the application citing provision section 248. Discuss the tenability. यहाँ पे दिया हुआ है कि ROC ने जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया था वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन अभी इनके अगेंस्ट कोर्ट में चल रहा है एंड दैट प्रोसिक्यूशन इज स्टिल पेंडिंग. हम लोग ने पढ़ रखा है स्ट्राइकिंग ऑफ वाले चैप्टर में दैट कंपनीज जिनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ये सारी चीजें पेंडिंग रहती है, they are not allowed to file an application for striking off, and therefore यहाँ पे बहुत simple सा answer है, they cannot file an application for removal of name or striking off because although the investigations are complete, prosecution is still pending against them in the courts of law. Done. Last, X was appointed as a liquidator in liquidation. In the process, he was required to make a preliminary report, discuss the content of preliminary report as well as timelines. तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको कब तक फाइल करना होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, तो कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, लिटिगेशंस, इन सब के बारे में अपने डिटेल्स देते हैं. क्लियर हुआ? तो अगेन ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. यहाँ पे अपना CRVI का जून 25 का पूरा पेपर का डिस्कशन होता है कंप्लीट. क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ एवरीबॉडी? डन. यहां पे आपका आईबीसी का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, एसएमसीएफ का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ और सीआरवीआई के भी पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ. सो नाउ आई होप दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है. अगर ऑल इन ऑल हम लोग देखें तो आपके अटेम्प्ट के लिए वी आर डन विद रिविजन लेक्चर्स, वी आर डन विद मैराथन लेक्चर्स, वी आर डन विद आईबीसी का केस लॉ लेक्चर, वी आर डन विद क्या बोलते हैं पास्ट ईयर पेपर के डिस्कशन लेक्चर्स. जून 24 दिसंबर 24 ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. जून 25 का आंसर राइटिंग सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एनालिसिस शीट इशू हो चुका है, आपको रिसोर्स गाइड दे दिया जा चुका है. सो आई थिंक जो चीज आपको चाहिए थी ना, ऑल ऑफ देम यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, प्लीज डू लेट मी नो. जी हाँ, जितने लोग भी यहाँ पे बैठ के मेरे को बोल रहे कि सर क्या बोलते हैं ये कर दो, पब्लिक कर दो, आई विल मेक ऑल द 3 लेक्चर्स पब्लिक, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो. हाउ डू वी स्टार्ट रिवाइजिंग द डे बिफोर द एग्जाम? आपको पूरा का पूरा चीज रिवाइज करना है. यू आर लकी बिकॉज दिसंबर में 1 दिन की छुट्टी मिलती है आपको फॉर CRVI. डन. Sorted. चलिए गाइस, तो आई थिंक ऑन दिस नोट वील एंड द लेक्चर फॉर टुडे, एंड हम लोग ऐसे ही मिलेंगे probably with some new I will come up with giving you some last moment tips. ठीक है, आईबीसी के ओपन बुक में क्या क्या बुक्स लेके जाना है, किस तरीके से क्या करना है, सबके लिए हम टिप्स लेके आएंगे. बट फॉर नाउ आई थिंक एवरीथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो और हैव इज विथ यू. जितने भी रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन माय रिसोर्स गाइड. एंड इफ यू डोंट हैव माय रिसोर्स गाइड, प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द रिसोर्स गाइड ओवर देयर. ठीक है, चलेगा सबको? तो चलिए गाइस, एवरीथिंग इज देयर इन द रिसोर्स गाइड, कशिश डोंट वरी. ठीक है, चलिए. तो ऑन दिस नोट फिर आपका ये जो आंसर राइटिंग सेशन है इसको हम यहीं पे करते हैं खत्म. आप सबसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, खुश रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल. धन्यवाद. बाय बाय.